Good morning, sir. Good morning, Yogita. Yes, sir. We will start today's session. We will start with those questions which are asked in the comment section of YouTube. Sir, people have asked the comment on our video that we posted. What is exactly this core subject knowledge? How much knowledge is it? Core subject knowledge? Okay. Yeah. You see, thing is that the problem is, from the perspective, I'm talking from the perspective of the student aspirants, they are all the time looking for quick fix solutions. That I tell one formula and they mug that up and that's it. They manage. There is no such formula. Core subjects. Now let us start talking about core subjects. Let us say it would vary from individual case to individual case. I will take some time to explain this point, so maybe it gets registered well with most of you. Let us say a straightforward case of a person X who took PCM up to 12th, and let us say he did electronics and communication engineering in BTech. Thereafter started working in the IT sector, worked there for 2 years. And now he is landed up for SSC Tech interview of SSB, and he is in front of the interviewing officer. Now, what is the connotation of core subjects? Now, what we will be doing is, since I try to assess a person right from how his grasp has been, right, since he has grown up. So, let's say I take his subjects from 10, 12, and I ask him, okay, tell me what was your best subject in 12th. And he says that his best subject here was physics. Right. So, okay, I stop here now. So I take a check. I said, okay, which topics in physics you had liked best? So he gives some thought and then he says randomly, okay, sir, I like this subject of optics and light quite a bit. Fine. So then I ask him that, you know that in case you pass a white ray of light through a prism, it splits up into 7 colors. He says, yes, sir, I know. So what are they? He says, it's as per the Vibgyor, So you expand them and you come to know. Okay, very fine. So then I ask him, okay, when these colors will emerge out of the prism, which color will you see on the top and which will be at the bottom? So now I'm trying to get a grasp whether he has an understanding of frequency and wavelength and all that. Now, I would say 50% of the aspirants I have asked this question, they get the answer wrong. They say that, since Vibgyor is there, so सबसे ऊपर जो है violet दिखेगा और सबसे नीचे red आएगा. Now, when they say that, I get an understanding that this person has not grasped the concept of wavelength and frequency and how, higher wavelength colors will deviate less. He doesn't understand that. Because if he says violet will be on top and red will be below, then there is no point asking him why the sky appears to be blue, why the sun towards the sunset appears larger in size and reddish in color. He or she will not be able to answer these questions properly. Otherwise, I may have asked these questions also. So ये बात हो गई अभी. So like that, I may go ahead. I may ask some other questions and all that. I just took a random example. What it shows is that
you could not have been mentally prepared. तैयारी करके नहीं रख सकते थे आप कि ये सवाल पूछेगा. Fine. Okay, now we moved ahead. So we come to now electronics and communication. So I asked this person, okay, between the two fields, electronics and communication, which was the aspects you were more comfortable with? So the person says, okay, I was more comfortable with the field of electronics. Okay, fine. So I stop. I take a check. I said, ye batao, now this field of electronics is based on semiconductors. So he or she says, yes, that is correct. It's based on semiconductors. So then I asked, okay, tell me, which are the elements that are popularly used as semiconductors in the world? So most of the people get the answer correct. I mean, 20-30% are zapped at this only. They can't answer. So they say, okay, silicon and germanium are the most commonly used elements. Very fine. So far, so good. Then I asked them, okay, please tell me, what is the valency of silicon? Now, more than 70% of the people I have been interviewing since 2010 are unable to tell this. Now, when they can't tell this, I straight away get an idea that this person's understanding of character of metals, non-metals, and how a semiconductor is in between, there is a lot of gray area here. Basics mein problem hai. Okay. So some of them say, okay, 40-50% say valency is 4. I said, क्यों 4 है भाई? क्या implication है इसका? So I find a large number of them are gray. Some are okay. They will give the right reasoning and all that. Fine. Covalent bonds बनते हैं and all that, and that it works okay. Fine. Then I ask a question कि यार ये बताओ कि सिलिकॉन जर्मेनियम यूज कर रहे हैं, कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, why कार्बन भी is not being used? अभी जो है, I would say not more than 5% are able to, come to this thing, ये कार्बन क्यों नहीं यूज होते, नहीं पता होता, रुक जाते हैं. Fine. इसी तरह से I just gave an example. We'll go into, अगर communication बोला होता तो मुझसे पूछना शुरू कर देता about fiber optics का पूछने लगता. I could have asked him about radio waves, transmission of radio waves कैसे होता है. I mean, I hope you people are getting an idea. Now, अभी I'll not finish with this answer. अभी हमने देखा कि यहाँ तक जो था, based on the quality of his answers, I've got a good assessment कि वे कितनी समझ है, इसकी clarity, सोचता कैसे है, how his दिमाग का software कैसे काम करता है. I got an idea. Now we move ahead. We said अभी जो है, अभी तुम फील्ड ऑफ आईटी में काम कर रहे हो, उसमें किस डोमेन में काम कर रहे हो, एंड दैट पर्सन सेज कि मैं जो हूँ, आई एम वर्किंग ऑन HTML, जावा, वेबसाइट डिजाइनिंग और इनमें काम करता हूँ. Now I start asking you questions about related that. Often it happens that this person now is pretty good at all these things. He can answer me very well. बढ़िया जवाब देता है. I ask him more. कि जॉब के बारे में पूछता हूँ फिर कि अच्छा कैसे जॉब चल रहा है, हाउ रिलेशंस विद योर दिस थिंग एंड ऑल दैट, कलीग, एडवांसमेंट क्या हो रहे हैं आपके फील्ड में, ऑल दैट. उसमें फिर मुझे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये वो बड़ी अच्छी बातें बताता है. Once he does all this, I lower the assessment I had made of his basics from 12th का understanding of physics, then his understanding of BTech degree का electronics communication, all that. थोड़ा थोड़ा मैंने उसका माफी दे दिया कि अभी जो है, जो काम कर रहा है वहां तो अच्छे से जानता है. He may be a selectable candidate despite this kind of background. ठीक. But coming to your specific questions about core subjects,
I hope you have got some idea. We will not take it कि suddenly अभी क्या आप कर रहे हो, वही बस कोर सब्जेक्ट है और आपने उसका फॉर्मूला एक लगाया, ये फॉर्मूला और ये याद किया और आपकी बात बन गई। तो भाई साहब और बहन जी, मेरे पास कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस होते ही नहीं है। The interviewing officer is a professional. He will be doing his job to get an understanding as to how your software works, how sincere you have been towards understanding things, what is the level of your understanding, right, since the time you have been growing up, since childhood, and now that you are sitting in front of the interviewing officer. I hope you have got a reasonable idea as to what this understanding of core subjects is all about. I would request Yogita, in case some questions have come to your mind based on what I have just answered, you please raise those, because it is very difficult for the persons who are, sending questions to us to raise questions at the moment. Batao. No, whatever I get, since we conduct these sessions even on Fridays and Sundays, people are want to know whether this is only for checking our confidence level, or in general we have to study about diodes also, in just study about let's say mechanical engineering में कोई मोटर है उसका भी फंक्शनिंग, वो सब कुछ आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वो डेप्थ पूछते हैं। दे वांट टू नो मतलब क्या क्या कितना आना चाहिए। Yogita, once again, from the point you are raising on behalf of the students, very rightly so, they are looking towards me to provide them some formula. Some list, हाँ। अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो तो अगर न्यूटन की 3 लॉ आपको पता है और उनको समझते हो तो तुम पास हो जाओगे। बुलशिट, दैट विल नॉट हैपन। इट कैन हैपन कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और वो आपसे बात सस्पेंशन सिस्टम की करनी शुरू कर दे। मैकेनिकल इंजीनियर आप बोलते हो मेरे को ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, अब उसने कुछ इंजन के बारे में नहीं पूछा, कोई सीआरडीआई टेक्नोलॉजी नहीं, डीजल पेट्रोल नहीं पूछा, वो सीधा आ गया सस्पेंशन सिस्टम पे, ये बोला ये बताओ भाई, आप ये बताओ कि ये जो है कॉइल टाइप है एंड प्लेट टाइप जो है सस्पेंशन में, इनमें क्या डिफरेंस है? क्यों ट्रक में प्लेट टाइप वाला सस्पेंशन होता है, उसमें कॉइल टाइप स्प्रिंग टाइप वाला क्यों नहीं होता? अब कई लोग बोलते हैं कि क्योंकि भारी होता है इसलिए जो है वो प्लेट टाइप होता है। देन ही गिरे द काउंटर क्वेश्चन कि भाई जो रेलवे वैगन जो होती हैं वो तो बहुत भारी भारी होती है पर उनमें कॉइल टाइप स्प्रिंग टाइप वाला होता है, अब समझाओ क्यों होता है? तो लोग थिंग इज लाइक दिस कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी चीजों की आप फंस जाओगे। So the essence of these knowledge of core subjects is the solution, if at all a formula lies, that you should have been sincere in understanding of your academics since you started studying. But from the example that I gave you, where a person had not been very sincere in his 12th class, उस लाइट के बारे में सवाल पूछा, वहां भी हाफ बेक 40% टाइप जवाब दे पाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी 30, 40, 50 तक पहुंच गया, लेकिन आईटी फील्ड का जहां काम कर रहा था वहां उसके लेवल ऑफ नॉलेज वाज 85-90% टाइप। मैं तब भी उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, मैं कहूंगा चल यार आज तो सुधर गया है, फाइन। So that is how it is going to go. Yeah, please raise more questions, Yogita. It will get further clarity for the kids, Sir, people are commenting, तो वो वाले questions लूं या नहीं इसी के और इसको खत्म करते हैं। Let's settle this issue in a deliberate manner. अच्छा, ठीक है सर। तो अगर बच्चों के कोई सवाल है कि वर्क प्लेस पे मुझे कितना पता होना चाहिए,
कुछ कुछ बच्चों का ये सवाल होता है, वर्क प्लेस पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी नॉलेज मुझे कितनी होनी चाहिए? Now, once again, see, I hope Yogita you understand कि कितना डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, यस सर। ये okay, let me clarify this thing to you. Clarification ये है कि भाई आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं इन्फेंट्री का ऑफिसर हूं तो मुझे इन्फेंट्री सेक्शन कैसे काम करता है, इन्फेंट्री प्लाटून कैसे काम करता है, इन्फेंट्री कंपनी कैसे काम करती है, बटालियन कैसे काम करती है, उसमें वेपन्स एंड इक्विपमेंट क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। आई शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, तभी तो मैं उनको सही से एम्प्लॉय कर सकता हूँ। तो अगर जो है जैसे अब आप जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया कि वो कहता है मैं HTML जावा वगैरह में काम करता हूँ और मैं वेब डिजाइनिंग वगैरह का हूँ, दिस इज द प्रोफेशन आई एम डूइंग, एंड आई रेज क्वेश्चंस विद हिम एंड ही इज एबल टू गिव गुड आंसर्स बिकॉज़ ही गुड आंसर तो वो दे देगा जो कर रहा है, जिसको ढंग से पता है। तो आई विल कम टू नो दैट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ग्रे हो गए तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। So that is what it is. Wherever you have worked, if you have worked with sincerity, you would know that. And if you have not worked with sincerity, आप नहीं बता पाओगे। मेरा एक दोस्त है, he is working on this thing. He had done research on hydrogen जो है usage in the vehicles in the future and all that as a fuel. He had done research on that. I started asking him things. I myself don't know much about this field at all. But he could answer me very well. I could come to know कि यार इसने अपना रिसर्च वगैरह ढंग से किया, this guy knows. So that is how it is going to be, योगिता। भाई अगर योगिता आपने लेटेस्ट से आपने सैमसंग के एयर कंडीशनर डिपार्टमेंट में काम किया है एज मैकेनिकल इंजीनियर एंड 2 साल आपने उनके R&D में काम किया है, तो फिर आप मुझे बता पाओगे ना जो जो ये एयर कंडीशनर पे लिखा होता है कि इसका रेटिंग ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसमें ये लगी हुई है, ये कैसे फ्यूल एफिशिएंसी करता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कैसे कम करता है, कूलिंग का इम्पैक्ट कैसे होता है, तो आप बता पाओगे। और अगर आपने ढंग से नहीं किया हुआ तो आप नहीं बता पाओगे। तो इट इज गोइंग टू बी फाइन। I hope this query has also been settled. मतलब शॉर्टकट नहीं है योगिता, शॉर्टकट इज नॉट देयर। एनीबडी हु हैज डन द जॉब वो बता देगा। लाइक व्हेन आई रेज दिस क्वेश्चन टू यू रैंडमली, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि भाई स्टूडेंट की किस तरह की क्वेरीज आती है, बिकॉज यू हैव बीन सीइंग देम डे इन एंड डे आउट, सो यू नो दीस काइंड ऑफ क्वेरीज कम। I mean, you don't need to be a very brilliant person. Just diligence से आपको पता है, because you are seeing them day in and day out. Similarly, like because I did my job sincerely, I feel so as an interviewing officer, as an assessor. That's why I know कि क्या हो रहा है यार. So it is going. If you're not done, you will not, and that will मतलब आपका किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट की, जिसमें फील्ड ऑफ वर्क जो है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पता कर लेगा। ये है ठीक। फाइन, आई होप दिस इशू ऑफ कोर सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट हैज गॉट सेटल्ड एडिक्वेटली नाउ। यस सर। चलो फिर आगे, लेट्स टेक अदर क्वेश्चन। यस सर। सर पीयूष मंडलोई इज आस्किंग, sir, I have a doubt in that. Should our stories be action oriented, or it should be natural, that is believable? ये सवाल भी आता है सर, एक्शन ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड, ये कैसे स्टोरीज बनाएं? ये बड़ा चक्कर है, ये एक्शन वर्ड जो आ गया इसने ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट, क्योंकि आपको लिखना पड़ता है somehow for whatever reasons जो है सिलेक्शन सिस्टम की
इसको वो टाइटल जो आप देते हैं उसको वो एक्शन बोलते हैं ना लिखने को, योगिता, इज दैट करेक्ट ना? हाँ। अब उसको अगर उन्होंने एक्शन वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया होता थीम से, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग टू डू. But of course, I'm not in a position to change the way the system has been working. In my personal opinion, the title or theme words would have been better to have been used to substitute this thing action. ठीक है? क्योंकि let us say a person is shown reading a book with concentration. तो थीम ये हुआ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन. तो ये थीम करेक्ट रहती है. अब एक्शन में भी यही लिखोगे आप, बट द टाइटल थीम अपीयर्स मोर सूटेड इन दिस. इज दैट राइट योगिता? फाइन. तो अब ये है, अब इसी हम पिक्चर को, स्टोरी को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं. अब आपने देखा कि अब आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आपने विजुअलाइज किया कि यंग एज का लग रहा है, 12th क्लास वाला बच्चा लग रहा है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है. तो अब आप क्या स्टोरी लिखोगे कि हाँ भाई ये डिफिकल्टीज थी, इसको मैथ्स में डिफिकल्टी आती थी, फिजिक्स में आती थी, इसने ये कंसल्टेशन की, इस तरह से प्रिपेयर, व्हाटएवर अपने रूटीन बनाया, उसने फोकस किया अपने ग्रे एरियाज पे, जो स्ट्रेंथ थी इन पे और बिल्डअप किया, एंड ऑल दैट, made some systematic plan, put in concerted effort in a in a smart manner. He planned his routine, और वो ठीक तरह कर करके उसने अपना ये आईआईटी का क्लियर कर लिया, एंड ही गॉट सक्सेस. और उसको जो जो अपना फील्ड ऑफ चॉइस चाहिए था आपको, उसको वो मिल गया. तो ये आपने स्टोरी बनाई. तो अब इसमें क्वांटम ऑफ एक्शंस इंक्रीज करना क्या होगा? अब एक ये कह सकते हो कि एक्शंस इंक्रीज करना ये हुआ कि उसने प्लानिंग में ए बी सी डी चीजें रखी. किसी ने लिखा, खाली किसी ने लिखा कि उसने जो था अपना प्लानिंग जो था पढ़ाई के ऊपर ही ऐसा रखा. किसी ने अब ये लिखा कि उसने अपना जो था, उसने ये देखा कि लॉन्ग टर्म उसके लिए अपना हेल्थ भी ठीक रखना है, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं होगी, डाइट प्लान ठीक नहीं होगी, तो पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी. तो वो भी उसने ठीक ठीक अपना रखा, बैलेंस वे में चला. तो अब कह सकते हो कि उसने एक्शन ज्यादा डाले हैं, आई मीन मे बी. तो इस तरह से फिर उसने जो था प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें ही कंसिडर्ड. तो somebody may write a little lesser number, somebody may write a more number, जो कि इसके एक्शन ज्यादा है. तो इस तरह से फिर उसने एग्जीक्यूट करके बात बना दी. उसी ओवरऑल तो कहानी यही है कि ये उसके आगे प्रॉब्लम ये थी कि आईआईटी का एग्जाम पास कर, और उसके लिए उसने कैसे प्लान किया और कैसे एग्जीक्यूट किया और कैसे वो सक्सेसफुल हो गया. तो somebody may give more number of points in preparation, planning, preparation and execution. Some may give little lesser points. So in my personal opinion, it is not such a big issue. ठीक है ना? I cannot say that somebody who's gone into a lot of details is definitely much better than the other person. But yes, to some extent, the personality of the individual does get revealed. और एक स्टोरी से नहीं, हम पूरी 12 की 12 स्टोरीज पढ़ते हैं, 60 की 60 एसआरटी पढ़ते हैं, सारे सेंटेंसेस पढ़ते हैं, सेट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा ओवरऑल ग्रास्प. ये चक्कर है ये एक्शन वैक्शन वाली चीज. once again my advice to you kids would be, do not get overly bothered about things कि मेरे एक्शन ज्यादा थे, मेरे एक्शन कम थे, and all that. एक कोहेसिव मैनर में आपने जो इंटरप्रेट की है, जैसे हमने पिक्चर ये ली, बात की हमने, एग्जांपल लिया, उसको लेके अगर आप एक कोहेसिव स्टोरी बना लेते हो कि ये इश्यूज थे और उसको ऐसे उसने ओवरकम करके अपनी सक्सेस ले ली, देन इट वुड बी ओके. अगर किसी ने आपसे उसमें 3 पॉइंट ज्यादा डाले हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के, इट आई वुड नॉट से कि इट डेफिनेटली इंडिकेट्स वो आपसे 3 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है.
but you should deliberate, and जो चीजें ध्यान में आती हैं उनको डाल दीजिए उसमें. That is how it should be done. Fine. I hope this question has been reasonably answered, Yogita. Yes, sir. हाँ, ठीक, चलिए. Yeah, sir, some fitness related question has come. Sir, I have SSB in 3 days. I am 105 kgs reduced from 135 kgs. I know this carries a bad impression. What are the chances of me getting selected? Should I go? मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? I presume that this person is a male, and I presume he will be somewhere around 6 feet or so at least. वो तो मालूम नहीं है हमको ना. We do मेल है not know. इतना मालूम है. हाँ जी. हाँ. तो what we know is that कि लड़का है. 130 से 105 पे पहुंच गया है, तो इसने 25 किलो वजन घटाया कितने भी टाइम वगैरह में, whatever. बट इन नॉर्मल कोर्स अगर हम हिंदुस्तानी लें, तो अगर हम मान भी लेंगे 6 फुट का भी है, तो 6 फुट वाले बंदे का भी ठीक ठाक वेट जो है वो तो 75 की जोन में होना चाहिए एट दिस यंग एज ऑफ एनडीए और सीडीएस एंट्री वाले जिसमें आप जा रहे हैं. तो अभी भी आप जो हैं कंसिडरेबली ओवरवेट हैं. Considerably means 25-30 किलो अभी भी ओवरवेट है. You see that you have reduced from 130 kg to 105. It is a good achievement as far as you as a person are concerned, and it is definitely reason to be proud. But thing is that हम जो assessors बैठे हैं, हमें क्या लेना देना कि आप पहले किस उससे आ रहे थे. आज भी आप इस थ्रेशोल्ड पे नहीं है कि आपको सेलेक्ट किया जाए टू अटेंड द ट्रेनिंग. एंड ऑल्सो यू सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सेलेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट वर्किंग इन अ वैक्यूम कि उनको कोई जज करने वाला नहीं है. हमें भी जज करने वाले हैं. भाई ट्रेनिंग अकेडमीज में जब कैंडिडेट्स जाते हैं, अगर ये मान लीजिए 105 किलो वाले आप पहुंच जाते and you are unable to cope up with the training, and you leave the academy and run away in a matter of 1 month, then I as a selector, as an interviewing officer, GTO and psychologist, we are to some extent blameworthy कि हमने कैसे सेलेक्ट कर लिया था ऐसे इंटरव्यू. कमियां तो थी जो छोड़ कोप अप नहीं कर पाया ट्रेनिंग से. तो ये सारी रीजंस हो जाते हैं. तो ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर 3 दिन आपके एसएसबी में रह गए और आप 105 किलो के हैं, तो आप सेलेक्ट होने लायक नहीं है ऑन द फेस ऑफ इट. अब ये मुझे पता नहीं कि आपकी हाइट कितनी है, एंड मे बी आप इतने स्ट्रॉन्ग वगैरह हैं कि आप अपने जीटीओ टास्क वगैरह अच्छे से कर सकते हैं एंड ऑल दैट. देन मे बी यू विल स्टिल हैव अ चांस दैट यू आर सेलेक्टेड. And in medically, definitely you will get a temporary rejection, and they'll give you a time to, reduce your weight and all that. अब उसमें आप कितना कोप अप करके क्या करते हैं, that you will have to see. But simple जो situation आपने बताई उसके हिसाब से मेरा आंसर for above 90% of the cases is that there's no point going. You will not be considered fit for that. Yeah, thank you. Generally, people compare with group members and all. So there is one question from Rohit. Sir, I saw some random recommended candidate saying some boy got recommended even though he did not know about Independence Day, war fought by India. All these things he could not answer. What are your views on this? My views on this is a philosophy I have been following in No Frills Academy right since I started working in this field. And that philosophy is that I personally do not waste any time at all on XYZ candidates having. I am only interested to know as to why my student did not get selected, what could have been the shortcomings,
and what measures can be instituted or what actions can my student take to get recommended. क्या होता है, हमारे को बहुत टेंडेंसी होती है कि हम दाएं बाएं वाले का देखेंगे, वो क्यों सेलेक्ट हो गया, क्यों रिजेक्ट हो गया. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम माय स्टूडेंट्स दे कम अप एंड टेल मी के सर देखो मेरे साथ वो 3 रिकमेंडेड वाले थे, वो भी स्क्रीन आउट हो गए. और सर आप बोलते हो कि आउट शाउट नहीं करना चाहिए, पॉइंट रिपीट नहीं करने चाहिए, पर जो था बल्नो एकेडमी से आया हुआ बंदा जो कि एग्जैक्टली यही कर रहा था, वो आउट शाउट करता रहा, उसने किसी को बोलने नहीं दिया और एक ही पॉइंट को 2-3 बार रिपीट करता रहा, वो स्क्रीन इन हो गया. तो आई से दैट वी विल नॉट गेट इनटू दीस डिस्कशंस. It is because it is going to be of no use at all to you as academic. Let me explain why. Firstly, आप जो मुझे कहानी बता रहे हो वो आपका वर्जन है, वो 100% सच्चाई नहीं है. 100% सच्चाई वो होती कि अगर मेरे पास स्क्रीनिंग प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती, जो बंदे जो है स्क्रीन इन हुए हैं जिसकी मुझे आप कहानी बता रहे हो, उनका OIR परफॉर्मेंस और एग्जैक्टली क्या उन्होंने पीपीडीटी में किया मैं सेलेक्टर देख पाया होता, then I would have been able to come to a pretty good assessment, which is not there because I'm only hearing your version. Firstly तो ये कमी होगी. दूसरी चीज क्या है, आपके सिलेक्शन से इसका क्या लेना देना, सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया है, मैं वैसे ही जानता हूं. So I have to just see whether you are measuring up to those criteria or not. That's all. स्क्रीनिंग में क्या इश्यूज है एंड आपकी क्या कमियां नहीं, उस पर हम फोकस करके we will guide you to improve on those things. That knowledge is of relevance to you. And this kind of knowledge ki koi the things which you should not follow, which you should not be doing, and somebody has done those and got screened in, that doesn't mean you start following that. It is not going to help you. और फिर जो है हमारा फिलॉसफी का एक पार्ट है बीइंग प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव फिलॉसफी का पहला असूल ये है कि you should focus your energies on things which are in your direct control. And direct control में तो आपके thoughts और आपके actions ही आते हैं. क्या influence इन चीजों की वजह से आप औरों पे डाल पाते हैं, that is part of indirect control. तो that is what it is. तो ये फोकस करना जो है makes sense. फोकस ऑन थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. के सिलेक्शन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे स्क्रीन इन दिया सेलेक्ट हो गया, इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी. यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स. So that is why I don't focus on those things and also advise my student not to do that. It is not going to help because invariably the students are in short trying to tell me कि सिस्टम इज बैड, ऐसे ही हो जाता है, रेंडमली किस्मत का खेल है, तो मैं तो ठीक ठाक ही हूँ. इफ यू फील दैट वे, तो इट इज एक्चुअली बैड फॉर यू एज एन एस्पिरेंट बिकॉज इट इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट योर डिजायर टू इम्प्रूव अपॉन योरसेल्फ इज वेरी मिनिमल बिकॉज यू फील दैट योर एज इट इज ओके ओनली. एंड आप कह रहे हो कि सिस्टम में गड़बड़ है या आप किसी ने कुछ ऐसे गलत काम किए जो आपके हिसाब से ठीक नहीं थे वो करके स्क्रीन इन हो गया या सेलेक्ट हो गया, तो देन देयर वुड बी टेंडेंसी फॉर यू टू डू दोस थिंग्स व्हिच एज पर योर कॉन्शियस एंड रैशनैलिटी यू डोंट एग्री टू योरसेल्फ. तो आप कंफ्यूज स्टेट में पहुंचोगे. कंफ्यूज स्टेट में आप जाओगे तो क्या आपका स्क्रीन इन और सिलेक्शन. So that is why in No Frills Academy we follow this philosophy that focus on your thoughts and actions and don't bother कि कोई कैसे screen in और कैसे recommend. Yeah, that's what it is. Thank you. Okay, sir. We will meet next time. And thank you.
Okay, then thanks a lot, boys and sentiment. girls, for your questions, and thanks a lot, Yogita, for raising very relevant questions. I hope I have been able to answer to some extent. Thank you very much.